मेरा एक और क्वेश्चन कि विद द एवोल्यूशन ऑफ एआई डू यू थिंक इट हैज अ प्रोपेंसिटी टू स्टार्ट अ थर्स्ट फॉर बीइंग एंटरटेन्ड? जैसे हमको भी वी आर बेयर कॉन्शियसनेस या वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल beings but computational beings at large. Most of the time we are just bored, so we have created avenues to get entertained. Do you think AI has the propensity to have a will to be entertained in the not near future, in the say after 500 years of its evolution? Would it also want some avenues to be entertained? So what you are hinting at is an alignment problem. We need to be careful of reaching a stage where it creates copies of its own. Right now it has just, there is that spark in terms of agentic AI where it is now doing stuff on its own. But the alignment problem hinged to that it should be aligned with our species objective and the larger objective of the planet and so on. So in this case, if it gets that, what you are maybe hinting at is a free will kind of a thing. Again, entertainment comes from that feeling side of it, right? So which ties back to what we started off this conversation with, कि consciousness उसमें है कि जागरूक हो रही है कि नहीं हो रही है. अगर हो रही है, then it might get into the, अरे मैं बोर हो रहा हूँ कुछ करो. So that is the core issue, कि we shouldn't put in research or we shouldn't open that Pandora's box itself कि भाई ऐसा कुछ करते हैं जिसमें ये ना खुद ही अपने आप को बनाते जाएगा एंड फिर देखते क्या होता है. वो विल नॉट बी देयर टू देखते हैं क्या होता है. हम तो नहीं रहेंगे. हम तो नहीं, हम एज ए स्पीशीज नहीं रहेंगे. मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट, लाइक व्हाई डू वी हैव टू हैव द क्लेम एट द लाइफ as it is? Who are we? हाँ, who are we to, हाँ, who the fuck would, क्योंकि we didn't create AI, we didn't create computation, we didn't create mathematics, it was always there in some other form. We kind of discovered it is what we just aligned it to make. हमने ये लैपटॉप बना दिया, इसके अंदर एक डिस्क है जिसमें 001010101 वो ब्लैंक था, हमने उसमें 01 में डेटा डाल दिया, ठीक है. जस्ट दैट. Who are we to have any claim, who are we to have any claim at realizing what this particular form of not life but say existence, at least we can say it's existence, it exists, gets to have in the future? So that is in the realm of, again, ethical AI lobby or that part of the conversation, right? Okay, are we saying that it can feel something or it shouldn't feel something? Who are we to? But that the genie is out of the bottle, we can't put it back in the bottle. Now it's like कि okay, आप पैसा किस में डाल रहे हो, कौन सी चीज पे रिसर्च कर रहे हो? So do you want to go that rabbit hole where नहीं, I will put millions of dollars in making AI conscious at a time where a lot of people are dying, there are XYZ problems in the world? That is the question, that is the larger alignment issue. मेरा एक और इस पे ही एक बिल्डअप क्वेश्चन है. समझो कि वी हैव ट्रेन्ड AI ऑन द ऑल ह्यूमन कोर इमोशन और वो उसका नॉलेज का बेस बन जाता है और द कोर वैल्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इज द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ऑफ एवरीथिंग, ठीक है. वो हमारा बेसिस है ऑफ ऑल ह्यूमन मोरालिटी एंड एथिक्स. सेम उसके मोरालिटी और एथिक्स जो है वो समझो मोरलेस हमारे मोरालिटी और एथिक्स पे डेवलप करते हैं, ठीक है. अभी मैं आपके लिए पानी लाने के लिए मैं ये नहीं सोचता कि अगर मैं इनको पानी पिलाऊंगा तो धूप से जो इनका डिहाइड्रेशन हुआ है वो मिटिगेट हो जाएगा और ये ही गेट्स टू हैव अ लाइफ. वो कोर था, वो चला गया. अभी पानी देना हैज बिकम द नॉर्म. It is the only thing which exists without the meta structure. There is the meta structure, there was the meta structure, but अभी वो meta structure is not fundamental. आप you can very well go down and get that bottle of water from a shop. अभी same ethics पे अगर AI evolve करता है 500 years into the future, तो क्या उसका जो मेटा स्ट्रक्चर है जो हमने बेस किया है कि एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम बोर होते हैं, लाइफ, मोरालिटी, एक्सियोलॉजी, रिलीजन, सब कुछ वो बेसिस की तरह लिया है उसने, लेकिन उस पर वो बिल्ड करता जाता है. क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि वो मेटा स्ट्रक्चर चला जाए और जो उसने बिल्ड किया है वो रहे? So right now we are at a stage where we are laying the foundation of that meta structure. So the question is that okay, now maybe what Claude is trying to do or Anthropic is trying to do is position themselves as those people who are ethical, and what this scenario might pan out where people see, like there is a branding of, you mentioned Grok is like this crazy LLM and ChatGPT. सलमान खान है वो. Well, सलमान खान है वो. So, yeah, we can attribute certain personality traits to each of these LLMs. So यहाँ पे
Claude is trying to present itself as this ethical, maybe Irfan Amir Khan. Khan, Irfan Khan. Irfan is too above all this, I think. So maybe it's trying to position itself as मैं बहुत सोच के करता हूँ, मैं बहुत ethical वाली चीजें देखूंगा and ये वो. So that is the narrative that every company is kind of Navigating. navigating